रितिका, रितिका गुप्ता, ठीक है। टेल मी समथिंग सर अबाउट योर सेल्फ। आप स्ट्रेट बैठ यस जाइए, सर। थोड़ा स्ट्रेट हो जाइए अब, हाँ। ठीक है, आपका एक बार हमको रेज्यूमे आप है ना ग्रुप में दीजिए, ठीक है। योर जॉब यस इज सर। व्हाट, योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू राइट डाउन द क्वेश्चंस। If you write them the question, you will get surely offer letter in campus. If you don't write, then 50-50 chance. तो देख लो, सबको लिखेगा तो अच्छा रहेगा। Every question you should write, whatever I'm asking. Your job is to make sure that what are the questions I don't know and what are the questions I know. If you know 50% of the questions, then it is good. If you don't know anything, then it is very good. Okay, and you know everything, that is very bad. Okay, so you will write down the questions and try to think in a brain, this question I know, this question I don't know. If you know nothing, it is very good. If you know 50%, oh good. But you know everything, it is very bad. Got my point ना? Clear ना बीजे वर्धन? ठीक है, now start. ठीक है, Raki Raj, completed na? Your bank is done. You'll become bank manager. Okay, Kerala. That much only you have to do. For bank, nothing you have to do. Rest, Gen Pact, you have to complete. That record to report, na? That you need to complete. Okay, bank is done. Okay. Yes sir. Give your CV in their group. WhatsApp में आप ना CV दे दो Yes जल्दी sir. जल्दी दे Yes दो sir. टाइम। One. What is your job? Rest of the people, what is the job? What is the job? Job क्या है आप लोग का? क्या जॉब है? Note down the Write down the questions. Write the question. You questions. have to note down the questions. नोट करेगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को नोट करके सोचेगा ये मेरे को आता है, ये नहीं आता है, लिखते जाएगा यस नो यस नो यस नो। अगर सब कुछ आता है मयांक जोशी का तरह, तब क्या करेंगे? इट्स वेरी बैड। यू नो एवरीथिंग, तो तुम्हें सब कुछ आता है हमको। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इट्स वेरी गुड। एंड यू नो 50-50, ओके ठीक है। तो आप अपना लेवल चेक कर लेगा क्या आता है, और फिर क्या करना है, उसके क्या करना है, उसके दौड़ेंगे नहीं So जाके। आफ्टर दैट वही रुक जाओ। जब वो क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आता है, तो आपका कोशिश ये रहेगा कि अपने को नेक्स्ट 48 आवर्स 96 आवर्स में वो क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये जब पढ़ाई करेंगे तो वो क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देंगे। गॉट माय पॉइंट ना? दिस इज द अग्रेसिव वे। जब जब पढ़ाई करेंगे ना तो बोरिंग नहीं फील करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दिस इज इट। ग्रुप में भेजो जल्दी से अपना सीवी। so एक भेजो जल्दी भेजो। so नहीं हम लोग के एक पास। कंपनी का हाँ so बोलो। हाँ सर परसों एक जीडी है हीरो मोटर कोप का सर, अभी ईमेल आया है। परसों है ना? अब अभी तो अभी का काम कर लेते ना पहले, ठीक है। वो ग्रुप में दीजिए, चैट बॉक्स में मत। परसों ही है सुबह। ग्रुप चैट बॉक्स में क्यों दे रहे हैं? व्हाट्सअप करिए ना, पैनिक क्यों कर रहे हैं? हाँ, ग्रुप में दीजिए। आपको ना 2-3 चीज सीखना पड़ेगा रितिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है आपको, पेशेंस। ये आपका एक प्रॉब्लम, और पैनिक बहुत जल्दी होते हैं। 2 चीज इंप्रूव करिए। क्या चीज इंप्रूव करना है आपको रितिका? क्या चीज इंप्रूव सर करना है? पेशेंस एंड पैनिक। पेशेंस एंड पैनिक। वॉरेन बफेट बनिए, यस बैंक का शेयर लेके बैठ जाइए एकदम 5 से 10 साल, पेशेंस पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। पेशेंस सीखिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हड़बड़ी नहीं है, पैनिक करने से कुछ नहीं होता। धीरज है तो धन है, ठीक है। धीरज को ठीक है, धीरज रखिए, ठीक है। धीरज को पाइए एकदम, ठीक है। ठीक, रितिका, ठीक है। आई विल स्टार्ट विथ यू। उसके बाद आपका जो वो आया ना जीडी, वो हमको अलग से भेज दीजिएगा, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। श्योर सर। गुड इवनिंग सर, माय एक नेम तो इज रितिका। स्ट्रेट होके बैठिए, आप एकदम आराम से बैठे, ऐसे करके सर बैठिए, नो ऐसे। स्ट्रेट ही बैठी हूँ। पता नहीं, आप भी स्ट्रेट हो जाइए, और स्ट्रेट होइए। जैसे अभी राशि का होके रखा ना, तो स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा अब। हाँ, जैसे मयांक सर अभी मैं लैपटॉप ठीक करती हूँ। लेट के रखे आप, तो वो से गड़बड़ होगा इंटरव्यू। थोड़ा और स्ट्रेट होइए, मतलब हाँ, और थोड़ा मतलब थोड़ा दूर ले जाइए लैपटॉप को अपने से। हाँ, कि पूरा घर भी दिखाई दे, मतलब होता है ना। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा लैपटॉप को नीचे लाइए, जैसे अभी राशि का है ना, देखिए राशि का दिख रहा है, वो ऐसे करके पूरा मतलब
वो से होना चाहिए कि तक चेहरा दिखने से नहीं होता है। थोड़ा पीछे रहिए लैपटॉप को ऐसे करके, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा इम्प्रूव करिए। देखिए निकिता मंगला का देखिए तो ठीक है ना, पीछे से है थोड़ा, एकदम कैमरा के एकदम आगे नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा ठीक है। ठीक है, किस मोबाइल से हो आप? मोबाइल से तो नहीं हो ना? ठीक है, वेरी। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोलिए। Sure, sir. Good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity. My name is Ritika. I am from Mandidavali. I have done my graduation from Punjab University, Chandigarh, and recently I qualified as a chartered accountant. During my articleship, I gained a lot of exposure in statutory audit, tax audit, and income tax returns. Besides this, I'm also fond of writing articles. I'm a course hero tutor. I also take assignments from foreign students. We are a nuclear family. My mother is a teacher. My father is a contractor, and my younger brother, is pursuing his engineering. Anything you would like to ask, sir? I'm willing to tell you. Thank you. Okay, what are the things that you have done in your articleship? Please brief me about it. Okay. So during articleship, I have gained exposure in statutory audit, tax audit, and return filing. Basically, I handle two clients. One is Nafkriti Builders, Badi, a hotel industry, of which I handled statutory audit and tax audit. Thereafter, a manufacturing concern, a cotton manufacturing concern, of which I done the statutory audit. So, Why you chose industrial training? so because I want to explore more, I want to see what are the kinds of different areas where CA can perform, and to get some time for my study also, sir. Okay. Why you want to join Big Four? Sir, because लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये इम्प्रूव करना yes, है sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Why you want to join Vedanta? Sir, as Vedanta is a well-known company, Vedanta is a well-known company. As I get the opportunity to get shortlisted in this, so I wanted to be a part of Vedanta. Sir, not making it. अभी आप कुछ मत बोलिए, वो हमका करने दीजिए पहले, ठीक है, मेरा काम। ठीक है, इंडियन आइडल नहीं चल रहा है तो अपना भेज दीजिए हमेशा, इंडियन आइडल वाला काम नहीं करना है, टाइम नहीं है इंडियन आइडल करने वाला, ठीक है। सब अपना भेज दीजिए, सब सही है, इंग्लिश सही है आपका, हो जाएगा। वाई हीरो मोटर कॉप? Hero MotoCorp is the leading industry in the automobile sector. So I also want to be part of that company to get to gain the exposure of the process of that company, and to also being a part of the leading company. Why you want to join in industry rather than a Big Four? So because I hear that the work culture and the environment which are where employees are, which is given to the employees are better in a good environment. So I also want to join. You mean to say the Big Four environment is not good? No, sir, I'm not saying it. Like, sir, I'm really fond of in industry. Sir, in Big Four, we have to supposed to wait for the particular assignment. You are appointed to that assignment. Maybe you get your liking assignment, your industry, but in a particular company, if I am joining it, so I know that this company I am willing to join. So sir, that's why. ठीक है, ये आंसर में एक इम्प्रूव करिए, ठीक है। वाई इंडस्ट्री जब पूछेगा, so I have already worked in CA firm and I have done industrial training, so that's why I was always wanted to get into in an industry. That way I also did industrial training.
ठीक है। तो इन दिस इंडस्ट्री आई एम ट्रैकिंग इट, माय कल्चर इज गुड एट दिस एंड दैट। ये नहीं कि बिग फोर खराब है, कुछ भी उसमें नहीं आना चाहिए, पर कल्चर इज गुड, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई हैव ऑलरेडी डन, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गेट आउट हियर एंड आल्सो हर्ड फ्रॉम सीनियर्स, दैट इज द मेन रीजन। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं। एक मिनट रुकिएगा, एक जन आ गया, उसको निकालना पड़ेगा मेरे को, बहुत जन आ जाते हैं। रुकिए। ठीक है। Why Big Four? Why not industry? Why you want to join Big Four? Sir, in Big Four, we get a lot of exposure in a different fields. So that's why I want to explore more areas. So that's why I want to join Big Four rather than industry. How you will get exposure in different field in Big Four? So like for Specialization you will get out here. No? yes. So like in Big Four, there are many different industries of which we are performing audit. So we get to know, I will get to know about the different processes of the various industries. So that's why. But in spite of a particular industry, you will get know about that process of that company only. ठीक है, अब हाथ नहीं हिलाएंगे, ठीक है। हाथ आप चला रहे थे ना, हाथ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हैंड मूवमेंट का दरकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बाई बिग फोर, ओके ना, इसमें आप ये बोलेगा कि आई हैव ऑलरेडी वर्क इन द सीए फर्म एंड इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई हैव आल्सो वर्क। I wanted to get into this particular profile, like this audit profile. So audit profile, because I've seen that in audit we need to get a clean knowledge about the particular business processes and all. And I always wanted as an article to get into a big four, but I was not getting any opportunity. And that's why to leverage myself, I did industrial training. मेरे को आने का मन था बिग फोर पर, बिग फोर आ नहीं पाई, तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले ली। समझे, सबको मन तो होता है, ये आर्टिकल का टाइम तो मेरे को तंग कर देता है, बिग फोर ही चाहिए, बिग सब पेरेंट्स को भी तंग कर देता है, बिग फोर ही चाहिए हमारा बादल, मेरे को तो बिग फोर ही चाहिए, बिग फोर ने टॉप 20 ना, हाँ बिग फोर, तो वो वाला एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये चीज आप उसको बोल सकते हैं कि आर्टिकल से आई वांटेड टू गेट इनटू बिग फोर बट नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, अगर पूछ ले वही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यू हैव सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, देन व्हाई यू वांट टू जॉइन बिग फोर। घुमा फिर आकर पूछ लिया तो बोलना कि मेरे को तो आर्टिकल सी में भी बिग फोर ही जाने का मन था, पर बिग फोर में मिल रहा नहीं था। तो मेरे को सीनियर ने बताया कि सब सीनियर से में कि इफ यू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इट इज गुड, यू विल बी एबल टू लेवरेज, यू लर्न समथिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो बिग फोर का ये आंसर याद रखना। इंडस्ट्री, आई डिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, so I wanted to get in the industry. It's not like I don't like Big Four, but I wanted to have a different type of exposure, and I heard about the culture out here is good. So my taste is a little more towards the industry. Even if I get a job at Big Four, it's not that I will not do it, but I wanted to always get into an industry, not because of work-life balance. Work-life balance what is लिखना, ठीक है, समझ गए ना, लिख लीजिए, रटने में तो ठीक है, आपको आंसर फ्रेम करने में दिक्कत हो रहा तो ठीक है, ठीक है। अभी हम आपको सवाल पूछ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, सच्ची बताइएगा। कैसा लग रहा है आपको, सर आपको पूछ रहे हैं सर ऋतिका। डर लग रहा है, डर हाँ, लग रहा है। डर लगता है, ठीक है, और हमने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है। ज्यादा डर लग जाएगा। तो दिस हैपेंस इन 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 इंटरव्यू आल्सो, बिकॉज व्हाई डर क्यों लग रहा है इसके पीछे हम आप लोगों को बता देते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी टाइम पब्लिक स्पीकिंग और यू हैव नॉट सीन ऑडियंस एंड गिवन एनी इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में भी यही होने वाला है, तो इसलिए वो डर हट जाता है धीरे धीरे। एंड दैट्स व्हाई भोजन मेरे को बोलता है कि मटेरियल दे दो, मटेरियल ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। मटेरियल को ना, मटेरियल को आप ना रोटी में डाल के खा लीजिएगा अचार के साथ, पेट कुछ फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि मॉक इंटरव्यू चाहिए, उसे डर हट जाता है ऐसे करने से, ठीक है। और इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम होता है, जिसने मान के चले बहुत सारा स्टेज वगैरह में बातचीत कर लिया ना, उसका बात अलग है, अदरवाइज सबको डर लगता है, एवरीबडी गेट्स, मेरे को तो अभी भी डर लगता है। ठीक है, ठीक है, ओके। इन द इंटरव्यू, ओके, हम आपको मूड स्लो डाउन करने के लिए ज्यादा वो नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक्स, ओके, तो यू हैव डन इन कॉन्सेंट्रिक्स, ओके, इन दिस कॉन्सेंट्रिक्स व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक्स। So Concentric basically a BPO company. Since I was placed in a FP&A department, a finance department, where we project revenue of our major clients to get an edge whether the actual revenue is as per the forecasted revenue or not. Okay.
Now you have done a lot of things out here. I see that you have done budgeting, forecasting, and actual performance, key financial metrics. Okay, what were the key Yes, sir. financial Yes, sir. metrics of concentrics? What was the key financial metric So, KPI? What was the KPI of a uh, concentrics? sir, a number of clients. Now, what is actually this concentrics? What it does? Sir, basically, sir, like we take the example of Amazon. Sir, when we call the customer care, that customer care was handled by Concentric. The employees are of Concentric in Amazon. Sir, so basically, Concentric provide employees for their various clients to handle their customer care service. So basically, FTs. Okay. Now you have done audit of IC industry like Navkriti Builders. Okay. Yes, sir. So what was your major observation when you did this audit? Yes, sir. Sir, I have never done when I get the chance to done that audit. I never done earlier the hotel industry. So I got a lot of observation during this audit. Basically, I get to know the applicability of 3580 section. Then, sir, there is a problem, and I find that observation. Sir, like this is a hotel industry, so there are travel agents like Make My Trip, Agoda, Booking.com. Sir, Navkriti had a contract with these online platform to have the hotel registered in that. So Navkriti provide commission when someone book hotel on these online sites. So Navkriti doesn't deduct TDS on that commission. So this is basically a major finding I get to know it. आप लोग बाकी जन जो है like Archana, Nikita Mangla, please on your videos, you see the tension in the face of Ritika Gupta and try to feel it. This is very important. This is a hot seat. This will be faced by you when you go for a campus interview. Try to feel it. YouTube में feeling नहीं आता है. मजा आता है. Feel अलग चीज का होता है. अभी फील आ रहा है. तो she is not getting the. It's very important. जितना क्योंकि वहां पर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ लेगा. अब ये क्या पूछ लिया? ये तो पढ़ के नहीं है. तो वहां पर थोड़ी ना ओपन बुक एग्जाम है. समझ रहे ना? कुछ भी पूछ सकता है. आपको टेंशन नहीं लेना है. She is doing well. Very good. ठीक है. You have written, okay, theoretical exposure to transfer pricing provisions, okay, section 92 BC. What are the things that you have done out here? You have written out in the CV. Sir, I have not written that. I just have that in my CA final syllabus. We have the chapter of transfer pricing, so Okay. I literally know about it. Yeah. You have written in your CV, but okay, that you have exposure to this. Okay, okay. Sir, theoretical exposure. Theoretical exposure. You know what is the revenue recognition principle for Vedanta? How they recognize their revenue, and what are the different models? Yes, sir. So Vedanta is basically a manufacturing concern of natural resources. Sir, Vedanta, the revenue of Vedanta is majorly came from zinc, aluminium, etc. Good, good. Go ahead. Tension nothing. Good. Yes, sir. When so like the industries like zinc, metal, the semiconductor. So Take water. पानी बगल में रखिएगा. yes, sir. No. Yes, sir. Uh, So zinc, iron. So these are used to build the sheets, iron ore, and the plastic sheets. And so basically, Vedanta sold all these natural resources to the industries, which are having in that pipes, sheets, metals in that industry. So basically, Vedanta got more of its revenue from that area. Who are the competitors? Tata Steel.
How do you recognize the revenue as per Ind AS 115? Sir, Vedanta. Yes. Uh, sorry, sir, I didn't recall right now. Okay, Ind AS 100 don't do like this. अब आपने क्या किया ना, अचानक से एक वो किया ना, इंप्रेशन दिया, वो ठीक था, पर आपने कुछ किया अभी अचानक से. हाँ, ये नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू इट. ठीक है, गुड. What is Ind AS 115 5-step model? Yes, sir. Sir, this is a new Ind AS which came up, which is a 5 model. Firstly, the contract, the defining of contract. Second, performance obligation. Third, determining the transaction price. Fourth, dividing the transaction price between the performance obligation, and the last, booking of the revenue. Transaction price. What is the breakup of transaction price? So the value of transaction price which is written on the contract, or the market price if it's not if contract is not there. Fixed price and variable price. Transaction price, fixed price, variable price. Ind AS 115. Okay. Fixed price, variable price. Okay. Fixed price, variable price, variable price. How it is calculated? Variable price. Sir, percentage variable price is most sir, likely based method, on a condition. Method, and one more is there. Okay, okay, sir. Two methods are there. I will study, please. Yeah. Okay. What is the journal entry in the books of lessee as per Ind AS 116? Journal Yes, entry in the books of lessee. So lessee will record in books of account right of use asset debit to lease liability, and for over the lease period, lessee will book the interest expense over the lease liability, and depreciation calculate on the ROU, and depreciation and interest expense will be recorded in the P&L consecutively. एक ना डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है. आप लोग को जब आंसर नहीं पता तो आप लोग गया खेला खत्म. खेला नहीं खत्म हुआ है, आप डर जाएगा, खेला तब खत्म होता है. मैं समझ में आया ना आप लोगों को? यू गेटिंग माय पॉइंट? आई ट्राइंग टू से इफ यू डोंट नो द आंसर यू थिंक नाउ गेम ओवर. गेम इज नॉट ओवर. गेम इज ओवर हाउ यू प्रेजेंट. If you don't know the answer, say I'm not able to recollect. You know the answer, you say. It's not like you have to say 10 out of 10 all the correct answers. Okay, it is about how you deal with the questions you don't know, and they are checking that only. Okay, so make sure that you stay confident. If you don't know the answer, no problem, but confidence is very important. Okay, what is the accounting process of Vedanta? These questions I have asked in Vedanta. Accounting process of Vedanta. Okay. What is the impact of an inflation on a company like Vedanta or a Hero MotoCorp? Sir, can I get 2 minutes? Certainly. Yeah. Yes, sir. Sir, for a company like Hero MotoCorp, the inflation, as per my thought process, it will be on the negative side. Like basically, the middle class family will, due to inflation, have their purchasing power lower, so they will not purchase that much automobiles as per as they did if inflation is not there. Okay. Vedanta. Sir, I don't think so. Inflation has any impact on Vedanta, because Vedanta have their major revenue from the big industries who are directly selling that things with to the retailer or the direct customer. So I don't think Vedanta is like direct dealing with the customer. So inflation has an impact on Vedanta. Who's the founder of both Vedanta and Hero MotoCorp? So I know the founder of Vedanta, Shri Anil Agarwal, the founder of Vedanta. I don't know about Hero MotoCorp. Share price, both of them?
Sir, not the share price of Vedanta, sir. Lastly, tomorrow, yesterday was it around 230 to 40 per share. And Hero MotoCorp, Sir, I don't know. it's around 2000. Okay. Hero MotoCorp 2000. in Okay, sir. Hero MotoCorp in automobile sector, where it stands in India? Sir, second. Who is the first? Maruti, na? Maruti Suzuki. Right, right. Okay. What is the impact of a COVID-like thing or lockdown on the companies like Vedanta and this Hero MotoCorp? If you have studied. No. पॉज नहीं ले सकते आप, आपको या तो हाँ या हाँ पॉज. Sir, I don't know, sir. I will not able to recollect. I will study on this. I am not able. I don't know मत बोलना, अच्छा नहीं लगता. Sir, I am not able to. I don't have much clue on this. Recall at the moment. Recall भी मत, recall याद ही नहीं क्या, recall कहाँ से है? है ना? Sir, I don't have Sir, much. I will study it. Okay. ऐसे स्टडी तो कर ही लेगा, बाद में मौका थोड़ी ना मिलेगा उसको भी. वो बोलेगा, उसको ये बोल रहा है, सर आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस. आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस सर. नौटंकी करके, सर आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस. क्लू ये तो वही है, इंग्लिश बहुत ये सही वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है. ठीक है, आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस. रिकॉल तो तब करेंगे जब याद करके आए, तब तो रिकॉल करेंगे. आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन इट. ठीक है, ये आपको बोलना है. कमिंग टू द सेम लिंक वंस अगेन. अच्छा से आपका पूरा भी ले गया अग्नि परीक्षा. कमिंग टू द सेम लिंक.